in IMA. और आज हम आपके साथ दूसरे एपिसोड के साथ आए हैं. So if you were online in the last Few weeks. 2.5 weeks, I I think a guess, few weeks. हाँ, then you might have seen कि काफ़ी ड्रामा चल रहा था over uh, gambling on Twitch. और लोग काफ़ी offended थे इस बात से कि बच्चों को गैम्बलिंग की तरफ लेके आया जा रहा है उनके फेवरेट स्ट्रीमर्स के थ्रू. और आई मीन न्यूज़ साइकिल इतना तेज़ है कि देयर इज़ नो पॉइंट इन ट्राइंग टू कीप अप विद इट. सो वी थॉट के गिवन हमारी मिशन स्टेटमेंट इस पॉडकास्ट की, व्हाई डोंट वी ट्राई एंड टॉक अबाउट द बिगर इशू हियर, जो कि है एडिक्शन और गैम्बलिंग इटसेल्फ, और कैसे वो लाइक बच्चों के ऊपर डाली जा रही है. Not तो necessarily like that, just like in general, like how addiction essentially तौर पे impacts you and क्या कहते हैं, also how gambling essentially and how behavioral addictions essentially तौर पे make its way into your life बहुत subtly तौर पर, and how a lot of systems around us are designed to kind of funnel you down the behavioral addiction route. हाँ, और हम एसोसिएट करते हैं एडिक्शन को लाइक हार्ड ड्रग्स के साथ यूजुअली, while being completely oblivious to कि कैसे हर एक चीज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर डिज़ाइंड इसलिए कि वो हमें कंप्लीटली ड्रॉ इन करे हमारी अटेंशन को, हमारे न्यूरल पाथवेज़ को, हमारे टाइम को लाइक चूसे बेसिकली. तो इस एपिसोड के अंदर मैं इतना नहीं बोल रहा हूँगा क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं जिनको मेरे से ज़्यादा पता है. तो मैं होपफुली यूज़फुल सवाल पूछ रहा हूँगा. तो आई विल गिव इट ऑफ टू ए अब कि वो बात करें. Acha, so just to preface this, to start off, we are not 100% experts in whatever we're talking about. Always refer to a professional when if you have a problem with regards to your own addiction or any other kind of problem that you're facing, since a professional will be best capable to help you out in that kind of situation. And your first step in order to resolve those problems would be to go and seek out professional help. डेफिनेटली. But putting that aside for now, we're going to try and hopefully explain as best as possible what was going on in like sort of the drama sphere that was going like drama that was going on over on Twitch, and maybe explain the fact that it wasn't 100% Slicker's fault, well, like the Twitch streamer's fault, that he was a victim of his own circumstances, you could say. Not exactly. He did really shitty things, I will say, before we get into the story, but he was also a victim in that situation, and that should be understood. Yeah, so in 5 minutes, why don't you tell us what a slicker is? What a slicker is. So, I'm gonna swap this over to. So, the main problem we were dealing with right now was a Twitch partner and a streamer who was regularly on stream. He didn't exactly participate in gambling on stream, but on the side, he was involved in a lot of sports betting. This man was known as Slicker. He essentially had a huge amount of money from Twitch and also his Twitch contracts, and also he had like other merch and stuff, and he had like a good amount of capital lying around. Decided to get into betting, and from there he it quickly escalated to the point where he burned all of the money that he had available to him from Twitch, and also like all of his other like assets and capital, until the point that he had to eventually go on to like ask other people from his community, from people around him, like even followers and viewers on fans even, for money. And the way he did it was in such a nefarious way. Okay, he would just he would send a video to people, and he would say like, I have to like go get my mom. I would go meet my mom in Iran, or like I have to go and my bank account's been frozen, or some other Oh, excuses like that.
and then he would go on to like ask for It's a bit of cash nasty. from those people. So he asked like huge streamers, even like from Mr. Beast, even like Saikuno and Ninja, even for money, and people like gave him thousands upon thousands of dollars, like even to the point like he asked some kids in his own stream who were like around 17, 18 years old, just getting part-time jobs, for like sending him money so that he would like in the end just burn on like sports betting, to the point and extent that even another crypto streamer who was involved in crypto gambling, named Trainwreck TV, he Mm-hmm. sent to Slicker $100,000. Oof. Like $100,000. He said, "Okay, I will send you this money once, and क्या कहते हैं, like you and me, our relationship is done. You can get yourself out of debt, and then from here, I don't want to see you anymore." And he even spent all of that money on sports Shit, betting. yaar. I mean, he got a clear get out of jail card, but even then, like the draw of uh like gambling like was really persistent with it. And मतलब also, उस point पे वो बिल्कुल भी rational decision तो नहीं ले no, रहा. he's not like he's not rational at all, like 100%. Like this was now going into the area of sending him like hundreds of thousands of dollars, and the total amount hasn't been disclosed. Saying like it's around, people have estimated that it's around anywhere from 300 to 400 to 300 to $500,000 in total that he spent. Shit, yaar. And everything is quiet for a while. All of these streamers and all of these people who had been essentially thought were scammed out of their money, they eventually all talked to one another. And the one main point about all of this was that Slicker essentially thought told all of them to like stay hush hush about this situation. Like, it's really embarrassing. I have to ask money from you guys, but like, keep it hush hush. So then what, like, people obviously talk with one another, and they got talking to one another, and eventually like things started to line up, like, like, oh yeah, Slicker also asked me for money, Slicker also asked me for money. And more and more people started coming forward with this story. And then people like obviously got upset because they were expecting their money back, but he had never paid any of them back. And on top of that, he was saying, like, I need more money at this point. Then finally, at like the peak of all of this, and all of these people coming forward, like all of these videos being made, like of all these Twitch streamers putting out different statements and different VODs, stuff, like, explaining this whole Slicker situation, it comes to a head. And Slicker essentially the opposite says, like, I'm a garbage human being, I shouldn't be trusted. And I saw that video. like there was like a popular VOD that came out on Hasanabi's stream, in where he discussed and talked with Slicker, and apparently, like, just to get his angle on why he did all this. And he seemed kind of remorseful for the like most part, but he didn't exactly seem like he was going to resolve this. So a couple of other Twitch streamers came up. पैसे तोड़ गए हैं. I know, like, I mean, people in general can be like really shitty to one another, but thankfully in this case, this had a bit of a silver lining kind of situation, where I'll cut back to my display. It has a bit of a silver lining, where XQC, Ludwig, Trainwrecks, and also I think one other person, they both agreed that they would be paying out everyone who had been scammed by Slicker. And essentially they said, like, send me your receipts, and we'll figure this shit out, because, like, these people are innocent people, and we should try and refund them. Like, with proof, they'll go through all of them and refund them. I mean, Trainwrecks खुद लोगों को इसी काम पे लगा रहा है, तो वो क्यों इतना हीरो बनने की कोशिश कर रहा है? That's also very true. I mean, a lot of people said, like, this was kind of like both XQC and Trainwrecks were both prominent crypto gamblers on stream. They were getting paid in like millions of dollars from like stake.com and all these other crypto gambling sites. So
there is obviously like a catch-22 kind of situation. Like, there is like vested interests in obviously putting this to sleep and like shoving this underneath the Mhm. carpet. This saga does continue a lot more, but it goes पर into हाँ वो very weird territory, which we're not going to go into right now. हाँ वो अजीब फिर ड्रामा शुरू कर हो जाता है पर हाँ. you're trying to tell me कि Twitch is a real place और वहाँ पे पैसे होते हैं और सोसाइटी उस पॉइंट पे पहुँच गई है कि हमें उसके बारे में बात करनी पड़ेगी वरना बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाएँगी। That is pretty much like a legit thing, huh? I mean, Twitch is a place. लोग वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, but तुम्हारे बच्चे भी मोस्ट प्रॉब्ली उस पे रहते हैं, एंड ऑब्वियसली उसके like societal wide implications हैं. I mean, नेट पहले बार जिंदगी में हम लोग के वो आ रहा है सही तरह से, अब लाइक बच्चे अब बड़े हुए हैं विद इंटरनेट. मैं कह रहा हूँ 2005 के अराउंड जब इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो मेरी ज़्यादा उम्मीदें थी कि हम थोड़ा आगे होंगे जहाँ हम अभी हैं उससे। हाँ, आई मीन ऑब्वियसली इस तरह होगा ही सही. पर हाँ, तो The drama escalated. We're not going to go over that. In the end, it has a minor silver lining that the community came together and they sought to reimburse everyone that was involved. Slicker obviously made out like a fucking bandit in all this situation, and like he's just gone low, laying low. He's like deleted all of his like socials and is just gone dark, which is obvious because like a lot of what he committed was like wire fraud and like grand larceny and God knows what other like crimes. शिट यार। So it's like obviously going to like, I mean, I would be very very surprised if like lawyers and other people aren't involved in this. हाँ, मैं अभी देख रहा था कि व्हाट्स द एवरेज एज ऑफ अ ट्विच यूज़र इन 2022, 35% are 18 to 24 years old. I mean, even like that being that age is like a really susceptible age and a really influenceable age. हाँ, डेफिनिटली। So तो हाँ, व्हाई इज़ इट बैड मतलब coming back to like why this whole situation, why we're talking about this situation in the first place, we're going to use हाँ, this as like a jumping off point to talk about addiction in general. So from our we obviously understand that at this point, like even though Slicker had so much money available to him, he had been given an out by other people involved. He still relapsed into like sports betting and also other forms of gambling as well. एक So सेकंड, आफ्टर द बेल्ड हिम आउट वो फिर से शुरू हो गया? yeah, it was after the train wrecks gave him like $100,000. He still अच्छा नहीं, continued to like क्या कहते नहीं आई हैं थॉट gamble that money away. अच्छा नहीं आई थॉट अभी वो दोबारा शुरू हो गया। नहीं उसके बाद नहीं शुरू किया, but like क्या कहते हैं I wouldn't be surprised if he's still doing it, quite honestly speaking. Because I mean, like we don't talk about like hardcore drugs all the time, like like meth, heroin, and like amphetamines and like PCP, and how all of these things are addictive, and like even are like socially accepted addictions like alcohol drinking, smoking, and like caffeine even is an addiction for in some way. We very rarely like regard the fact that there are other addictions which come underneath this umbrella as well, or at least operate in a very similar like capacity to this. गैम्बलिंग प्रॉब्लम सिर्फ गरीब लोगों को नहीं होते जिनकी बीवियां घरों में काम करके उनके कर्जे उतार रही होती हैं, लेकिन मिलियनर ट्विच स्ट्रीमर्स भी उन्हीं मसलों के अंदर पड़े होते हैं। तो मतलब क्या क्या ऐसा चेंज होता है दिमाग के अंदर के आपको होता है यही एंड है, सब कुछ इसी पे उड़ाना है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है? So very wonderful क्या कहते हैं segue into our next topic. We're going to go into essentially talk about like a slightly deeper cut into the neuromechanics of addiction and how people become addicted and why we are so susceptible to addiction as like being human. Like because a lot of the times you think like I have enough strong, I'm like मेरे पास बहुत ही will power है यार, मैं अपने आप को रोक सकता हूँ इस तरह की चीज़ों से, मगर that's
not 100% true. You can very easily become addicted to pretty much anything. Anyone is susceptible to addiction, because what addiction is doing is it's preying upon a very primal area of the brain. तो हाँ, अक्सर लाइक लोगों से आप बात करो तो लाइक होते हैं कुछ कूल बॉयज होते हैं ना कि लाइक नहीं यार मैं जो भी कर लूँ मुझे नहीं एडिक्शन होगी। Hmm. तो मेरा उसमें यही ख्याल होता है कि आपको प्रॉब्ली वो चीज़ मिली नहीं है जो आपको पकड़े उस तरह से, और जब मिलेगी तो यू वोंट बी एबल टू डू मच। Exactly. I mean, that is literally the situation जो हम लोग deal कर रहे हैं इसके साथ. It's not कि you haven't, you're addiction proof. It's that you haven't met the thing जो तुम्हें addict कर सकती है. So going a bit deeper into the neuromechanics of addiction, we got this review paper. It's a bit old, but it's published by Nature. So hopefully I'll do a good enough job in explaining what's going on. So first of all, there are 3 phases to addiction. There's the fact that you get exposed to whatever thing is causing addiction, and it causes changes in your brain which induce euphoria. It could induce like stimulating effects, or it can induce like, for example, drugs of abuse are generally classified into categories like narcotics, cannabinoids, depressants, stimulants, and hallucinogens. Mhm. So all of these things have one effect that they do to you. It's like they could be like they could put you into a deep stupor. They could also like where like you just become more sedated, you could say. Or they can also act in a more euphoric way. They're giving you feelings of pleasure and happiness. They can also cause like areas of the brain to light up, causing you to see hallucinations. नहीं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि कैनबिस के जो केमिकल्स होते हैं वो एडिक्शन नहीं कॉज़ करते, उसका क्या मतलब होता है अगर इनका भी इफ़ेक्ट सिमिलर ही होता है बाकी ड्रग्स से? We will get to that a bit later on. अभी जो है हम लोग ओके, बस बेस लेवल पे डिस्कस कर रहे होंगे. तो हम लोग ओके। अभी आगे जाके ये कैनबिस को एग्जैक्टली मैंने अभी थोड़ा सा वीड आउट करना है. Fuck. ये डिलीट ना करना। हाँ ठीक है, रहने दूंगा. तो हाँ, we will approach cannabis in a more like क्या कहते हैं succinct way a bit later on. अभी जो है हम लोग major drugs के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. तो the first thing is that they produce one effect जो essentially तौर पर like is an aberrant mental state, है ना? And the second effect that it causes is the release of dopamine. अब मेन चीज मैं बात जो करना चाह रहा था ये है कि all of these systems essentially तौर पर prey on the same effect कि there is the limbic system of the forebrain. Okay. अब limbic system जो है ना, द फक इज़ दैट? the limbic system is essentially तौर पर your reptilian brain, है ना? Very simply speaking, it's this brain. It's the part of the area of the brain that's responsible for eating. It's responsible for your motivation and reward center, and your fight and flight responses. Like very सही। base functions essentially तौर पर, like your very reptile responses and like primitive responses. इस वजह से इसको लाइक वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो रेप्टाइल ब्रेन के तौर पर रेफर किया जाता है लाइक इस एरिया ऑफ द सिस्टम को. सही है। तो this essentially तौर पर all of these drugs have those effects which I mentioned before, but also along with it they release dopamine in this system, in the mesolimbic dopamine system. Now by अगेन जो releasing रेप्टाइल ब्रेन है। the reptile brain, it turns the reptile brain on, saying okay, like yes, like I am doing something which is good for me, like because this is like a reward center of the brain which reinforces habits like eating and thirst and also like having sex, like gaining pleasure. All of these things come from that that subsystem. And when you essentially thought or smoke up or like do these drugs, they have one of those major effects like which you mentioned before. They also activate this system here. So by inducing this system, you essentially create a link between the limbic system and your memory, your long-term memory, है ना? Because obviously when you have food, like तुम जब खाना खाते हो तो अच्छी फीलिंग अच्छा, होती है ना हाँ। उस खाने पे, है ना?
हाँ, और इसको याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ यार, मैं कभी बार भूख लगती है और मैं फिर खाना खा लेता हूँ और फिर मैं बेहतर फील करता हूँ, है ना? हाँ, तो इस तरह टाइप चीज़ें जो है ना, वो फिर लाइक इसको हाईजैक कर देता है सिस्टम को, फिर कि वो डोपामीन रिलीज करता है ब्रेन के अंदर जो है, एंड साथ में जो है वो फिर नेचुरली तौर पर री करता है वो इन सिस्टम्स को। अब एक जो नेगेटिव चीज़ जो है ना इसके बारे में, अब रिवॉर्ड हैप्पी फन टाइम तो हर बार हर सारी ज़िंदगी के लिए तो नहीं चल सकता ना। आई मीन यू, अनफॉर्चुनेटली है ना, अनफॉर्चुनेटली चल सकता हैप्पी है। फन टाइम अब 24 घंटे तो नहीं चल सकता है, तो इवेंचुअली यू विल, क्या कहते हैं, ऑल ऑफ दिस डोपामीन इन द ब्रेन विल बी क्लियर्ड अवे एंड तुम्हें एक डाउनर फील होगा, है ना? दैट्स व्हाट सच्ची तौर हुँ, पर द स्टार्टिंग ऑफ डिस्फोरिया. Three main characteristics of addiction is tolerance, dependence, and sensitization. Tolerance is that like you have to use more of the drug over time to get the same effect as before. Dependence is that you get withdrawal symptoms when you are not using the drug or not undertaking the activity. And हुँ, sensitization is that the longer you last without after the withdrawal effects and after the withdrawal period, you become sensitized and more like susceptible to relapsing into this addiction that you were in before. हाँ, So the thing about the main like thing about the limbic system is that since it governs such basic functions of our body, essentially तौर पे, है ना, like such as eating and the reward system, we can हाँ, understand that it's very closely linked to the areas which are involved with our memory, and also very closely involved with the areas which are involved with our emotional states as well. So हाँ, this क्योंकि एट creates, द कोर ऑफ इट हमें यही चीज़ मोटिवेट करती है ना कि हाँ, खाओ, रिप्रोड्यूस करो, एग्जैक्टली यही चीज़ें वो लोगों हैं। से मिलो, सोशलाइज़ करो। हाँ, यही चीज़ें जो हैं वो तुम्हें इस तरह से मोटिवेट करती हैं करने को चीज़ें। तो वो चीज़ें जो है लाइक क्या कहते हैं, इट एक्ट्स ऑन दैट, इट प्रेसेस द सेम बटन, यू कुड से ऑल ऑफ दीज हाँ, एडिक्टिव थिंग्स। एंड नॉट ओनली आर दीज एडिक्टिव सब्सटेंसेज ऑपरेट इन दैट वे, हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली बिहेवियर्स जो हैं फॉर एग्जांपल वो भी बहुत ज़्यादा डीपली उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। लाइक यू हैव फूड एडिक्शन विच एसेंशियली तौर पर acts in the very similar way, although you're not directly chemically stimulating those areas of the brain, like जिस तरह हमने पहले receptors के बारे में बात की थी. This is हुँ, you operating off the basis of internal opioids and internal endorphins and internal cannabinoids. Now like you हाँ, think of this like 2 मिनट के लिए क्या है, cannabinoids तो like यार cannabis के अंदर होते हैं, और opioids तो यार plants के अंदर होते हैं, मगर बात है कि हम भी खुद भी जो है endogenously brain produce करता है ये चीज़ें जो है। नॉट सेइंग कि 100% अच्छे होते हैं, बट लाइक ये जो नेचुरली प्रोड्यूस वाले होते हैं, दीज आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल फंक्शन। बट बात ये सही। कि व्हेन यू प्रेस ऑन दैट बटन अ बिट टू हार्ड, वो भी लाइक अननेसेसरी हो जाता है एक पॉइंट तक। वही ना, बैलेंस आउट कर दोगे तो हाँ, तो देन यू एसेंशियली तौर पर लाइक रिप्लीट द ब्रेन्स रिसोर्सेज जो उसके पास अवेलेबल होते हैं कि लाइक टू मेक अदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस या अदर इंपॉर्टेंट लाइक क्या कहते हैं। तो दैट्स व्हाई हाँ, विद एडिक्शन the most important thing, the really cool thing about it, well, cool thing तो नहीं कहना चाहिए वैसे, but like the unique thing about addiction is that हुँ, since it taps into the same pathways and stuff, like you can see people who with addiction who like forego eating, sleeping, like क्या कहते हैं, sexual pleasure, and even like क्या कहते हैं, all of these other things, because you don't need those sources of like those reward sources per se, but since you already have external sources which are providing those the really necessary release of dopamine that's required for you to function. हुँ, तो इसी तरह से जो है ना आजकल के ज़माने में हम लोग कह सकते हैं, well, gambling तो is long storied and बहुत like prevalent रहा है throughout human history. तो gambling addiction तो I guess more or less properly exist करता ही था किसी एक form में, like हाँ, since forever. लाइक आई थिंक डूम स्क्रॉलिंग भी जो हम कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट सारे ही, वो भी यही नहीं मैकेनिज़्म्स ट्रिगर कर रहा होता। Exactly. A lot of these like other behaviors such as doom scrolling and क्या कहते हैं, excessive eating, pyromania, kleptomania, all of these other behaviors, they also have very similar effects जो essentially तौर पर इसी सिस्टम को हाईजैक कर देते हैं। अब बात यह है कि हमारे जो आजकल लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेट के जो चीज़ें हैं, they've very highly like weaponized this kind of like sub like functioning of our brain to in order to tap into that area, like आई फील लाइक 2012 के बाद एक्चुअल वैल्यू प्रोड्यूस करना बंद कर दी थी टेक इंडस्ट्री ने, और तब से वो बस
एडिक्शन के ऊपर पैसे कमा रहे हैं। हाँ, I mean like most of these sites can be broken down into like very glorified Skinner boxes. तो हम लोग फिर आते हैं कि आजकल के जो हमारे नेट फॉर एग्जांपल एडिक्शन जो है, ऑल्दो DSM-5 जो है वो आजकल क्लासिफाई नहीं करती इंटरनेट एडिक्शन को इतना ख़ास तौर पर. They have recognized DSM-5 being like the holy bible of psychiatry and psychology, जो essentially तौर पे सारे जो psychological disorders को define करता है. They've defined internet addiction, but they haven't defined क्या कहते हैं नहीं sorry, they've defined gaming addiction, but they haven't defined uh, internet addiction. They think internet addiction is just a lack of control, like OCD, and क्या कहते हैं also like pyromania and kleptomania, like ये impulse controls के ऊपर होता है, like ये higher executive function के failing है कि like you, it stops you from properly processing what you're doing. Like वो जो inhibitory impulses नहीं होता है, like you know I shouldn't do this, like I shouldn't pull out my own hair, yeah I shouldn't like pick at my like lips and pick at my fingernails, और like इस तरह टाइप चीज़ें, मगर तुम फिर भी करते हो टाइप चीज़. तो ये impulses जो है ना उनको stopping का वो एसेंशियली तौर पर डिसऑर्डर ज़्यादा देखा जाता है. मगर अब आजकल के ज़माने में जो है देयर इज़ मोर रिसर्च बीइंग डन, जो हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनेट एडिक्शन जो है ज़्यादा क्लासीफाई किया जा रहा है एज एन एडिक्टिव प्रॉपर्टी, चूँकि द मॉडल बिहाइंड एडिक्शन like substance addiction is very similar to how behavioral addiction works. हाँ, मतलब कंपनीज लिटरली हायर कर रही हैं लोगों को कि लोग कस्टमर्स को ऐसा स्टिमुलाई दें कि वो आते जाएं बार बार या कंपल्सिवली चेक करें अपनी ऐप्स को खोल खोल के. तो थोड़ा रिडिकुलस लगता है कि यू वुडंट इवन ट्राई एंड क्लासिफाई दैट एज एन एडिक्शन, लेकिन गेमिंग को आप कह दोगे कि है. Exactly. I mean like वो obviously उस तरह किस्म की villainization चल रही है, जिस तरह वो 90s में satanic panic जो चला था थोड़ा सा, हाँ, तो उसी तरह गेमिंग के अगेंस्ट जो है वो लाइक क्या कहते हैं चला गया हुआ है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक पेपर खोला हुआ है कि अर्ली रिसर्च कंडक्टेड इनटू द स्टडीड कंप्यूटर एडिक्शन and of some computer scientists and technicians, and then typical research participant जो है वो सिर्फ solitary male loner with long-standing interest in technology and science. अब I mean you have narrowed this scope down so much कि क्या कहते हैं कि तुम लाइक एक बड़े स्पेसिफिक किस्म के इंसान को, लाइक तुम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को टारगेट कर रहे हो कि हाँ यार इस बंदे को इंटरनेट एडिक्शन है, बट नॉट लाइक एवरीवन एल्स हु इज लाइक ग्लूड टू देयर फोन्स 24/7, उनको इंटरनेट ये एडिक्शन नहीं है. किस साल का पेपर है? एंड ये भी लिटरली आई थिंक ये अभी अभी का पेपर है. ऐसा नहीं, ये नहीं, 2005 का है. 2005 का है. माय बैड चलो उस जमाने में स्मार्टफोन्स इतने भी प्रेवलेंट नहीं हाँ थे तो. स्मार्टफोन्स उस जमाने में प्रेजेंट नहीं थे. मैं वैसे गलत पेपर गलती से देख रहा था. अच्छा नहीं, हाँ दिस 2015 पेपर जो है ये भी आगे फर्दर क्लासिफाई करता है into like क्या कहते हैं the act of the action of essentially the internet addiction, where it says कि like internet addiction in its main section is a internet gaming disorder is a proper condition. अच्छा, नहीं तो तुमने ये पेपर्स एक दफ़ा देखे हैं तो मे बी मैं तुम्हारे से सवाल पूछता हूँ जो शायद ज़्यादा डायरेक्ट करें कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं. तो अगर क्या कुछ लोग ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं एडिक्टिव बिहेवियर से देन अदर्स? क्या कुछ एजेस ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं? और क्या कुछ लोग इम्पर्वियस होते हैं उससे? लाइक व्हाट डिसाइड्स के मतलब क्या दिमाग में प्लास्टिसिटी होना आपको फक अप करती है अगर आप एक्सपोज हो जाओ एडिक्टिव बिहेवियर्स के साथ? I mean तुमने बहुत पॉइंटेड किस्म के क्वेश्चंस पूछे हैं जो लाइक एग्जैक्टली लाइक कट टू द लाइक रूट ऑफ दिस मैटर. हाँ. पहला जो तुमने क्वेश्चन पूछा था कि लाइक पहला क्वेश्चन क्या था फिर से? Fuck. बेसिकली जनरल क्वेश्चन ये है कि व्हाट मेक्स समवन मोर ससेप्टेबल हाँ टू वन एडिक्टिव मेक्स, बिहेवियर्स? हाँ तुमने कहा था पहले कि ससेप्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है एडिक्टिव बिहेवियर में या नहीं. तो susceptibility तो obviously एक होती है. You everyone has a genetic predisposition. Some people can be more addicted to that dopamine high, so to say, or have more conducive neural pathways जो exist करते हैं जो ज़्यादा easily तौर पर बंदे को उसके towards लेके आ सकते हैं, towards addiction. And then वो बस एक triggering factor की ज़रूरत होती है कि जो बंदे को उस तरफ guide कर दे. एंड दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ठीक है, कुछ कम लाइक ससेप्टेबिलिटी होती है टुवर्ड्स इट बिकॉज दे डोंट हैव दैट रिवॉर्ड मैकेनिज्म, इतना डीपली रीइंफोर्स नहीं होता उनके अंदर.
दूसरी जो बात हमने की थी कि यंगर एजेस के अंदर कौन सी एज ग्रुप्स जो है एसेंशियली तौर पर ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं टू एडिक्शन. हाँ हमने ये बात की थी कि लाइक अभी वो या हाँ एडिक्टिव हाँ बिहेवियर्स भी एडिक्टिव और बिहेवियर्स इन जनरल भी. तो एडिक्टिव बिहेवियर्स जो है ना, बात ये है कि योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द हायर एग्जीक्यूटिव फंक्शन ना, जो एसेंशियली तौर पर अडल्ट ब्रेन जिसको कहते हैं, है ना, लाइक यू नो जैसे हम लोग कहते हैं कि बड़े ज़्यादा समझदार होते हैं, तुम कह सकते हो. एंड हाँ छोटे बच्चे जो है लाइक थोड़े से इडियोटिक होते हैं कि लाइक वो स्टूपिड डिसीजंस कर सकते हैं. हाँ Not everyone, this is not a blanket statement, मगर like this is the generalized sort of like statement जो सारे लोग put out करते हैं कि like you know बड़े होके समझदार हो चुके हैं. There is some weightage to this, क्या कहते हैं, to this saying, in the sense कि your prefrontal cortex fully develops by the time you're around 24, है ना. हाँ Before ऑफ कोर्स that, उसमें भी कुछ लोगों का बाद में होता है हाँ कुछ का कुछ लोगों पहले का बाद में होता है, कुछ लोगों का उससे भी पहले हो जाता है. That's entirely अपना dependent मुझे on the फील होता है individual. अभी भी थोड़ा सा रहता है डेवलप होना I mean, and that's perfectly normal. Everyone develops at their own pace. हर किसी का जो है डिफरेंट हिसाब होता है. तो हाँ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो एसेंशियली तौर पर तुम्हारे इम्पल्स कंट्रोल को काफ़ी ज़्यादा मैनेज करता है, और साथ में जो है इट लुक्स एट कॉन्सिक्वेंसेज इन योर एक्शंस और उसको एवेल्यूएट करता है. तो ये चीज़ें जो है ना ये डेवलप हो रही होती हैं इन योर टीनेज ईयर्स फ्रॉम अराउंड 12 to 13 years old to around 24 years old. इसकी डेवलपमेंट मोर लेस सोलिडिफाई होती है, मगर लाइक देयर इज ऑलवेज विगल रूम्स अराउंड दैट, विगल रूम अराउंड दोज एजेस. So when you don't have that higher level executive function available to you, so it makes you very susceptible to addictive behaviors. This way, so you see a lot of kids getting into like gaming addictions, or see a lot of kids getting into like YouTube addictions, and kya kehte hain, like other social media kind of addiction, other social media addictions, because they're more susceptible us time pe. And that like the app that you're using, or like the game that you're playing, is kind of engineered in a way from the ground up to already tap into that system and trying to get you on that platform for a longer time. So obviously like क्या कहते हैं, if you're more susceptible उस एज के अंदर, and then आगे से ये भी चीज़ तुम्हारे like एक चीज़ engineer हुई है उस चीज़ को tap in करने के लिए, so you have like kind of like a perfect storm brewing. मतलब एक यंगर एज के अंदर जो लोग एडिक्टिव बिहेवियर्स के अंदर पड़ जाते हैं डज दैट फंडामेंटली चेंज देयर ब्रेन हाँ, I mean क्योंकि वो even डेवलप हो रही है अभी even in like the papers I was just quoting right now, it was mentioned in there that essentially the addiction physically changes a lot of the neural pathways in your brain. So when you're already tapping on the reward system, and since the brain works on a function of क्या कहते हैं, reinforcement, okay, like you know you have an experience and then you have that same experience again, it reinforces those pathways, है ना. So it causes literal changes in your neural pathways in the brain and how you interpret reward and motivation. So even if you are addicted at like a very young age to something, and afterwards you're not addicted to it anymore, but like you've moved past that susceptibility वो जो addiction, बात you कर रहे थे have susceptibility to it and a potential to relapse into it very easily, because those pathways are already there, and it takes a very long time for those pathways to like undergo extinction. So this is why we come to our fourth major point of today, of like the increasing trend of having like all of these addictive mechanics like pointed towards kids and people who are essentially more susceptible to these things. Like for example, we already have like a lot of algorithms available to us, like from Facebook and like on Instagram and also other websites that we travel to, that we and use every day के like वो हम लोग की personality को बहुत deep level पे understand कर सकते हैं. And when you add that to the fact कि like you know like these companies already understand you as a person, कि like you know this person has like a propensity to gamble, you could say, and like he's opened up a couple of gambling sites, yeah, but he's spent his like credit card on like he's used his credit card at a couple of casinos and stuff like that, it leaves like a permanent trail in like your digital footprint. So then these companies in turn find out, like they get advertised and host like casinos and stuff, online casinos and stuff, and they start pumping out ads to this already susceptible person. And
they lead them down to that rabbit hole very very quickly. Like हम्म, बहुत intentionally तौर पर direct किया जाता है to exploit like a person's already who has a weakness in that sense. ये तो ये लूट बॉक्सेस टाइप मैकेनिक्स जो होते हैं, छोड़ो गैम्बलिंग को भी, इनमें क्या गैम्बलिंग एस्पेक्ट होता है, क्योंकि अक्सर तो फ्री में ही मिल रहे होते हैं ना आपको। I आई mean, हैव नेवर loot पेड फॉर अ boxes, लूट बॉक्स। the like the main core behind the loot box thing is not like कि वो free में मिल रहा है. It's the fact कि तुम्हें initially तौर पर free में वो एक hit देते हैं कि like you know ठीक है, like ये तुम्हें free में मिल रहा है, you get the enjoyment of opening up a loot box, है ना. वो भी in a sense एक gambling ही है under another name. It taps into that same reward system, but बात है कि वो free में तुमने use किया. The main aim of all of these like major developers and these microtransactions is to finally just get your credit card information into the game once, because once it's in the game it like very like it lubricates the pathway to like it makes it हाँ, much easier to like spend money in a game, you could say. Once that financial information is in and you're spending money, it becomes very like a non-consequential decision in your mind to like commit to paying money, like oh my god I have to pay कसम से like लाइक लाइक इवन डोमिनोज वाले इतने हरामी हैं। यहाँ पे उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे ऑर्डर करो ना, ऑप्शन होती है सेव करना है पेमेंट मेथड के नहीं, और लाइक आई एम श्योर अगर वो सेव्ड हो ना और मैं बस 3 टैप्स के अंदर ऑर्डर प्लेस कर सकूँ, आई वुड बी ईटिंग अ लॉट मोर पिज़्ज़ा। I mean यही बात है ना. पर The main aim of पर the मैं game एक is वो to like lower पैरानॉइड friction. बंदा हूँ जो वुड्स के अंदर रह रहा है और मैं इन्फॉर्मेशन नहीं अपनी देना चाहता रैंडम लोगों को, तो मैं नहीं करता। पर जैसे स्टीम के पास मेरी पेमेंट इन्फो है, तो अक्सर हाँ. मुझे कोई गेम नज़र आए ना छोटी-मोटी, तो आई एम लाइक ले ही लेते आई मीन हैं, लाइक क्या दो होता तीन डॉलर क्या कहते हैं किसी बंदे को, चलो यार $10 हाँ, लगा देते हैं उधर. एंड देन आहिस्ता हाँ, आहिस्ता से ये चीज़ें एस्केलेट करती जाती हैं, देन यू वेरी क्विकली लूज द प्लॉट essentially तौर पर of what you're doing. And to हाँ, add even more confusion to all of this, like a lot of games and a lot of like these even mobile games जो बच्चे आमतौर पे खेल रहे होते हैं, like they have essentially तौर पर mechanics where you purchase in-game currency for a certain amount of money, है ना. फलाओ इतना बड़ा स्कैम लगता है। इतना insane होता है ना when you buy in-game currency ना, and then you have to buy another in-game currency to buy something else, and then इस तरह से abstract करते जाते हो ना from there. हाँ, तो 3 करेंसीज़, एक डॉलर या रुपए होते हैं, हाँ. फिर एक मेन करेंसी होती है, फिर एक स्पेशल करेंसी होती है जो उस मेन करेंसी से आती है। हाँ, and then you like also have to spend like that special currency like a certain amount of times to get another kind of special currency, and then इस तरह हाँ, abstract होते जाता है कि तुमने कितने पैसे invest किए हैं गेम के अंदर, क्योंकि like we can. वही होती है हमारे दिमाग में फीलिंग, क्योंकि मतलब जैसे स्ट्रैटेजी गेम्स खेलते हो, दूर से इतनी डल लगती हैं, लेकिन उसके अंदर भी मज़ा यही होता है कि आप लेयर्स होती हैं चीज़ों की और आप उसमें एंग्रोस्ड होते हो, और इट फील्स लाइक कंपनीज़ ने बस उसको वेपनाइज़ कर लिया हुआ है टू गेट एक्चुअल मनी आउट ऑफ यू। And we're not like क्या कहते हैं, this is not like a very paltry some kind of money, like हम दोनों ने चलो यार $100 लगा दिया है तो बहुत ही कोई बड़ी बात हो गई यार. हम लोग like इस तरह की बात करें कि like get people who spend hundreds of thousands of dollars. अभी recently एक story आई है like literally like about a month or two back कि एक Diablo Immortal का player, it's like a mobile gay version of Diablo, of like a really हुँ, old game, and it's like filled to the brim with microtransactions, with had a huge amount of backlash from the community के like you know क्या सीन कर रहे हैं, they're just making this pay to win और वो सारा कुछ. He spent $100,000 on this शिट यार, game, in game cosmetics, in game like power ups के लिए और इस तरह टाइप चीज़ों के लिए, to like क्या कहते हैं to make his character more powerful. And बात ये है कि like he's gotten so powerful at this point in this game कि he can no मैं खेल नहीं longer सकता। match make with other people in the game because he's too like out of their skill bracket. यार, He's essentially taught like paid to win himself out of the game, which is like हाँ, the end goal that every developer at this point dreams of. हाँ, तो हाँ, लोग आई मीन ज़्यादा टेंशन ले रहे होते हैं, बच्चे सूटे मारेंगे ये वो बहुत ऑब्वियस होते हैं, लाइक गैम्बलिंग और इस तरह की चीज़ें आई फ़ील लाइक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने की पोटेंशियल रखती हैं, क्योंकि हर किसी का बच्चा ऑनलाइन है और देख रहा है ये चीज़ें, और अगर मतलब यही है ना कि पहले एक फॉलोइंग बनाई, एक ऑडियंस बनाई, जब वो सारे जमा हो गए फिर एक स्विच फ्लिप किया, अच्छा अब हम गैम्बलिंग चला रहे हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म पे। ये जो होगा उसके अंदर लास्टिंग इम्पैक्ट होगा इतने लोगों की ज़िंदगियों पे।
लाइक एक तो ए लाइफ चेंजिंग अमाउंट्स ऑफ मनी, एंड दूसरी बात ये है, तो ठीक है, अच्छी बात है कि अब आजकल कुछ लॉज उन्होंने इन्फोर्स किए हैं अगेंस्ट डायरेक्टली मार्केटिंग टुवर्ड्स चिल्ड्रन, मगर all of these things are like so many of these things are still going under the radar, जो like रिपोर्ट हुई हैं। इतनी सारी और हाँ स्टोरीज हो सकती हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रही हों, एंड क्या कहते हैं वो लाइक अंडर द radar जा रही हैं। like even हाँ looking at like the largest online game जो अब आजकल चल रही है, multiplayer massively multiplayer online game, Genshin Impact, which is a glorified gacha game, so to say. Gacha it's game a being gacha. like क्या कहते हैं, it's like Japanese form of gambling, like it's slots but like make it Japanese, you could say. थोड़ा सा weird है। Wait, Genshin Impact कोई फाइटिंग वाली गेम नहीं है? I mean, it is skinned to be like a fighting game, magar like the mechanics which are more deeper into it, you have to kind of gamble every day a certain amount of currency in order to get unlocks, and then unlocks तुम्हें मिलते हैं तो फिर तुम ज़्यादा बेहतर खेल सकते हो गेम को, and this whole cycle repeats over and over every day. क्या बकवास है? And like Genshin Impact on its first year of release made $3 billion just from microtransactions. It was a free to play game, Yeah. and उसने like it's on every available my like platform such as Android, iOS, Microsoft Windows, PS4, PS5, Switch, सारा तो कुछ, फ्री हो गए, 3 बिलियन कमा लिए हैं. and 3 billion उन्होंने ऐसे कमा लिए एक साल के अंदर. And like the whole mobile game industry has like kind of like devolved into towards this like singularity endpoint of just like क्या कहते हैं, of making more gacha games, you could say, like vending machines and like क्या कहते हैं loot boxes. Even like जो हम लोग सोचते हैं कि बड़ा बनाइन है कि like for example हम लोग Apex बहुत खेलते हैं आजकल, और like शुरू से हम लोग Apex में involved हैं, हम लोग हर साल हर बार जो है वो बैटल पास उसका ख़रीदते हैं. बैटल पास का मेन इंटेंट क्या है? आई डोंट नो, एक दफ़ा खरीद लो, फिर आपको इतनी गेम खेलनी पड़ती है कि आप वापस पैसे अर्न करो कि आप एग्जैक्टली अगला बैटल पास खरीद सको. इफ़ यू डोंट, फिर आपको खरीदना पड़ेगा, वरना आपको फोमो होता रहेगा कि मुझे ये स्किन नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं मिल रहा. एग्जैक्टली एंड हम लोग काफ़ी रिलीजियसली तौर पर जो है हम लोग वो फ्री टू प्ले बैटल पास के अंदर हम लोग पार्टिसिपेट तुम करते लोग होते थे. जो हम्म? हाँ, करते एक पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा हम करते लोगों ने थे. काफ़ी लाइक 3-4 सीजन ऐसे गुजारे थे उनका फ्री टू प्ले बैटल पास करते हुए. Where like हाँ, and then the main intent was just to get your payment information in there once, and then उसके बाद जो है वो फिर तुम पैसे खर्चना शुरू हो जाओगे. And then also makes a reinforcing kind of habit of daily challenges होते हैं हर रोज़. Like majority games इस तरह की चीज़ें यूज़ करती हैं of like having daily challenges या weekly challenges, जो उसमें तुम हर हफ्ते टर्न अप करो या हर दिन टर्न अप चेक इन करो तो तुम्हें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, या फिर तुम्हें वो लाइक क्या कहते हैं वो मिलते हैं वो challenges कंप्लीट करने पे तुम्हें पॉइंट्स मिलते हैं. then there is reinforces a habit of going on every day, and then वो पर habit जो eventually addiction में change कर जाती है बहुत जल्दी. हाँ, पर टू लाइक सम इट अप, हमारा मकसद शुरू में स्टोरी सुनाने का ये नहीं था कि ट्विच ड्रामा किसी तरह भी रेलेवेंट है. इट वाज मोर टू पॉइंट आउट कि टेक जो है वो आपको फक ओवर करने निकली हुई है, तो बी विजिलेंट. Like you have to be very careful about what you consume and क्या कहते हैं वो किधर से consume कर रहे हो. Like a lot of streamers और on all these other people. मतलब हाँ, GTA $60 की गेम थी, और उसने इतने सालों में जाके $2 बिलियन कमाए, और एक फ्री गेम अगर 3 बिलियन कमा रही है in like 1 year. एक साल में, तो क्या प्रॉब्ली आपकी सोल बेच रहे हैं वो उस पैसा कमाने के लिए. तो Exactly. I mean हाँ, when everything like एक rule of thumb जो मुझे बहुत पसंद आता है वो ये होता है कि if anything is free to play ना, the it's not that the product is free, you are the product उस situation के एग्जैक्टली. अंदर. लाइक सही है, GTA के अंदर वायलेंस है, बकवास है, गंदगी है, पर योर चाइल्ड इज प्रॉब्ली सेफर प्लेइंग GTA देन दीज गेम्स ऑनेस्टली. Exactly. I mean these are just like literally glorified वो vending like glorified slot machines हाँ, आखिर जाओ में. कसिनो भेज दो अपने बच्चों को अगर यही हाँ, खेलना है. या हाँ, एंड नेवर गिव योर किड्स योर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन. that's like 100%. Yeah, like my kids are just like not gonna have any access to any financial information on the internet. Like सारे payments मेरे through जाएंगे. Like this और is अपनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कहीं डालने की ज़रूरत नहीं exactly, है. you कोई don't have कहीं to. कुछ भी सेफ नहीं होता है, सिर्फ इल्यूजन होती है कि आपकी इन्फो सिक्योर है. हाँ, like all of लाइक these like एनीवन there's कैन been like हैक योर एनी अकाउंट इफ दे वांट टू. exactly.
and all of these like क्या कहते हैं repositories of like is like payment information, like Amazon दो तीन हाँ बार hack हो चुका हुआ है, and all of their payment information is leaked, like 50 million लोगों का, and like हाँ even like क्या कहते हैं your insurance companies and like banks have been hacked and उनके payment information निकल आती है. ऐसा ही है. So like you should always like think twice or think even like 3 or 4 times before putting payment information into like ये even like a semi sketchy website, even like a well known website. तो हाँ, ये स्टार्ट हुआ था एज अ पॉडकास्ट अबाउट गैम्बलिंग, लेकिन अब हम फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं. अपना डेबिट कार्ड कहीं ना डालें ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड यूज़ करें क्योंकि वो इंश्योर्ड होते हैं, और पेमेंट्स रिवर्स हो सकती हैं डेबिट कार्ड की, कोई नहीं करता. That is very true. And also like minor also side point, if in the time you get scammed out of like क्या कहते हैं money है ना, you should always claim the fact कि identity theft नहीं हुई, उनके बैंक की तरफ से गलती हुई है कि उन्होंने गलत पेमेंट ऑथराइज किया. लाइफ प्रो like this is like a life hack, but और identity. अगेन हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हम तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहीं से भी नहीं है. ये दिस इज एक्चुअल जस्ट एडवाइस. स्टफ दैट वी हैव हर्ड, वी आर जस्ट relaying फॉरवर्ड, ये हियर से है. बाकी जो है लाइक हाँ क्या कहते हैं थोड़े से लाइटर नोट पे एंड करते हुए हम कहते हैं कि like I mean all of these gaming in general, all of this stuff, like even food, like I mean all of these things are good. I mean they're good, they're meant to be good for a reason. Like तुम एक experience कर रहे हो and तुम्हारे लिए एक अच्छी बात होती है, मगर लाइक क्या कहते हैं ऑब्वियसली हर चीज़ के ऊपर हल्की सी चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना और उसको लाइक क्या कहते हैं थोड़ा सा इन चेक रखना जो आई गेस इज ऑलवेज रिकमेंडेड फॉर एवरीवन. एग्जैक्टली. और अगर आप अभी तक हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच. This was Q&A on addiction. Hopefully we'll have other more interesting topics later on, and inshallah we will see you next week. एंड वी आर ओपन टू फीडबैक, तो लेट अस नो कि हम क्या all डिफरेंटली of कर सकते हैं. all of the papers that we've mentioned, all the like information that we've gotten is mentioned in the comments below, in the description down below. And also और huh, और अगर कोई फैक्चुअली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी तो हम feel उसे free to करेक्ट correct कर us. देंगे. We don't mind 100%. We just care about the fact that we get correct information out to the masses. हाँ. And even if you're an expert in the field, feel free to come on and correct us in person. We would 100% enjoy that to happen. Yeah. So All right. this was Q&A on addiction, and we will see you next week.